Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, let's get ready for the exams. Let us see how what can we do to make sure that you enjoy exams. You had a lot of good time preparing for your annual day and you were enjoying. So I wanted to give you small tips, छोटे से tips जिसमें you will be enjoying your examination preparation too. So let's see कि हमको इसके लिए क्या करना है. सब सबसे पहले you have to inculcate a habit of sleeping on time and getting up on time. And before you prepare for the exam, ये दुआ जरूर करे, which you also start doing it again in the assembly. हम लोग assembly में every day ये दुआ पढ़ते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा. So where we are asking our Allah, oh my Lord, increase me in knowledge. This is a dua, supplication to seek Allah's help in increasing knowledge and understanding, particularly during exam periods. Exams में ये बहुत मदद करेगी, ये मुझे मदद की है, इंशाल्लाह आप लोगों को भी करेगी. अगर आप लोग देखेंगे कि एग्जामिनेशन में हमको ये एक फोर्टिस देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो इस पर बहुत बड़ी रिसर्च करा है कि ये बच्चे एवरी एवरी चाइल्ड कैन राइट एन एग्जाम, लेकिन क्या हो जाता है जो बच्चे एग्जाम्स में परेशान हो जाते हैं, लिख नहीं पाते हैं. तो द रीजन बिहाइंड इट इज ये एक सॉर्ट ऑफ एंजाइटी आपके पास अब शुरू हो जाता है कि एग्जाम्स आने वाला है. Will I be able to do it or not? There are so many confusions that you keep on उसके बारे में सोचते रहते हैं. There is no पॉजिटिविटी एट ऑल कि ये इतना सारा पोर्शन है, ये कैसे कंप्लीट होगा, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट और आई एम नॉट हेल्दी. तो इसमें आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जाता है and that becomes one of the cause for not doing well in your exams. एंड यहाँ पर आपको ये भी देखते होंगे कि थोड़ा मम्मी पापा से भी स्ट्रेस होता है. मम्मी ऑल द टाइम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्स में पढ़ो पढ़ो. एंड देन पापा के भी एक्सपेक्टेशंस रहेंगे, योर फादर आल्सो एक्सपेक्ट्स कि इतना परसेंटेज लाना है, मैं आपकी फीस क्यों पे कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग सो हार्ड फॉर, एंड व्हाट रिजल्ट्स यू आर गिविंग. तो दिस ऑल आर द expectations from your parents, and your teachers also give you stress. So I request the parents and teachers here, you become friendly with your children, find out उनका क्या प्रॉब्लम है, उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं before exams. So instead of giving them, reach out to us. We are also here always 24/7 ready to help you. अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आपका बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है एग्जाम में और कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ रही है, तो वी आर हियर टू हेल्प देम. तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमको क्या करना है. तो आपको पहली चीज जो करनी है वो है शेड्यूल योर टाइम. मेक अ टाइम टेबल. लाइक मंडे के दिन अगर मैं, एंड डोंट डू लाइक दिस कि मंडे टू सैटरडे 1 वीक में मैथ्स पढ़ लूंगी, 1 वीक साइंस, देन इंग्लिश, सोशल स्टडीज. डोंट डू इट लाइक दिस. एवरी डे रीच आउट फॉर हर सब्जेक्ट के लिए कुछ टाइम निकालिए. So you know how much time you are going to make your own timetable जो आपको convenient लगता है. Like मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे पूरे सब्जेक्ट से 1 घंटा 2 घंटे, आई कैनॉट रीड ओनली वन सब्जेक्ट एट ए टाइम. लेकिन आपको लगता है कि मुझे 1 वीक में एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करना है, दैट इज कन्वीनियंट फॉर यू. मेक योर टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस एंड इट शुड बी देयर ऑन योर टेबल. Why am I showing you this picture? ये इसलिए बता रही हूँ मैं आपको ये पिक्चर कि आपका टेबल इज शुड बी मेंट ओनली फॉर स्टडीइंग, नॉट फॉर स्लीपिंग. एंड उस पे क्या चीज होनी चाहिए, अ ग्लास ऑफ वाटर, योर बुक्स एंड लैम्प. योर लाइट भी बहुत जरूरी है. इट शुड फॉल प्रॉपरली ऑन योर बुक्स एंड योर हाउ यू सिट. Otherwise, if your posture is not proper, if you're not sitting straight, थोड़ी देर में आपको बैक पेन, नेक पेन शुरू हो जाएगा and then you get irritated. So make sure that your sitting position is very good and sleep on time. और बेड पे भी कैसे सोना है, बिकॉज बिफोर एग्जाम्स ये तो हमेशा करना है, लेकिन अभी तो ये 1 महीना यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर दैट यू हैव टू स्लीप ऑल्सो इन अ गुड पोस्चर एंड स्लीप फॉर अ कंप्लीट 7 hours एटलीस्ट.
और अब आपके टेबल पे क्या नहीं रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोन हटा दीजिए, टीवी हटा दीजिए, नो सोशल मीडिया। ये 1 महीना कंप्लीटली इसको हटा दीजिए, टेबल के पास बिल्कुल नहीं रहना फॉर योर डिस्ट्रैक्शंस। इसका ध्यान रहे। हाँ, अभी यू आर स्टडिंग, यू विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट, आई नो, फॉर मोर देन 30 मिनट्स और 45 मिनट्स अगर कोई कॉन्सेंट्रेट कर सकता है तो इट्स वेरी गुड। Then after that, take a short break or for 5 to 10 minutes, go out, walk for some times, or okay, if you like going to see some message, but don't waste your time. You remember, not more than 10 minutes should be allotted for, relaxation. So make sure to highlight all that is very important in your when you are noting down from your textbook, especially high school children, कि ये these are the important highlights, हमको ये कैसे highlight करना है. So underline them, keep them ready whenever you are. Let us see ki what all are the techniques you can use so that you remember. So there is something called mnemonics, flowchart techniques, acronyms, graphic aids. So let us see आप ये कैसे use कर सकते हैं to remember your long so that आपके memory आसानी से you remember, because examination में when you have got long big sequencing आप उसमें से कुछ miss कर देते हैं where you lose your marks. So I'll give you small techniques using mnemonics and acronyms. How can you remember your long answers? So let us see what are acronyms. Acronyms में क्या होता है, like you have, for example, you see NASA. NASA is the full form is National Aeronautic and Space Administration. UNESCO. So ये सारे इतना बड़ा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, आपको यूनेस्को देखते ही आपको याद आ जाता है यू इज फॉर यूनाइटेड, N is for nations, E is for educational, S for scientific, and C for cultural, and O for organization. And similarly for NATO, most of you must nowadays are typing on chatting while chatting ASAP, as soon as possible. Nobody is saying as soon as ASAP, something as it has become like ASAP. And what is AIDS? Then you know that acquired immune deficiency syndrome. And WHO is a World Health Organization. So these are few examples which are formed by taking initial letters of a phrase, and we are creating a new word using those initial words. So these are called acronyms. So you can use them, including, for your exams, whatever are these letter, big side headings which you feel you cannot remember. So make an acronym like this. So आपको आसानी से याद रह जाएगा कि आपकी side heading क्या थी. And if you look at the examples of acronym for class 10th को recently, some students were saying कि ma'am, how do I remember, ये बहुत मुश्किल हो रहा है कि conservation of resources जो chapter है उसमें हमको कैसे इतने सारे side headings याद रखना बहुत मुश्किल लग रहा है. So that's I was thinking कि उनको एक I have given you an acronym. You yourself can prepare, and if you have got any problem you can ask me so that I can help you making acronyms. Like you made an acronym protect. Protect P may you have the preservation of habitats. Then once you know that side headings, preservation of habitats, uske bare mein you can write in your own words, you can write paragraphs, pages together. And then how restoration of ecosystem. आपको मालूम हो गया आर से प्रोटेक्ट से, पी से तो प्रिजर्वेशन ऑफ हैबिटेट हो गया, आर से restoration of ecosystem, O for offsetting carbon emissions, and T for tree planting and initiatives, E for education and awareness, and C for conservation of water resources, T for technology for sustainable development. So these are the main important 7 side headings जो आपको याद रखना है. तो अगर आपको just ये याद कर लिए कि conservation of whenever doing the conservation of natural resources, I have to, you just remember the word protect. Then, using that, you can write your answer easily and score full marks. And similarly, there is one more technique called mnemonics.
एंड ये मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्लास में बताती रहती हूँ कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे हमेशा माय फेवरेट न्यूमोनिक्स, यू नो, व्हेन यू हैव टू लर्न अबाउट द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में याद नहीं रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, यू नो, यू लूज द सीक्वेंस। तो आप एक निमोनिक्स बना लिया है, लाइक माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ओके, सो माई का एम ले लेंगे आप तो मर्क्यूरी, वेरी में से वी ले लेंगे तो वीनस, एजुकेटेड में से ई ले लेंगे तो अर्थ आ जाएगा, एंड मदर का एम इज मार्स, जस्ट का जे इज जुपिटर, सर्व्ड का एस लेंगे तो सैटर्न, अस का U is Uranus, and noodles का N लेंगे तो Neptune. So now by associating it like this, you will be able to make an entire mnemonics. One sentence of mnemonics will give you the sequence. Sir, in most of the answers आपको sequencing important है. तो वो sequencing के लिए you can make mnemonics like this. And like I have made mostly class 10th. Class 10th को एक digestive system का एक process है, उसको आप फ्लो चार्ट से भी याद रख सकते हैं या एक निमोनिक्स बनाए। आई हैव ट्राइड मेकिंग वन निमोनिक्स फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, लाइक माय सिस्टर ईट्स सो मच, प्लीज च्यू स्लोली एंड डोंट फॉरगेट डेजर्ट। ओके, दिस इज वन निमोनिक। तो नाउ इफ यू लुक एट द एक्सप्लेनेशन, माई में से एम, the first process in digestion starts with your mouth, so then you can write about what happens inside the mouth. Then system is जब मैं S ले रही हूँ तो I wanted to write about the process, what happens to the process in my stomach. ओके, स्टमक में जाने से पहले फ्रॉम माउथ टू स्टमक इसोफेगस में भी कुछ प्रोसेस होता है, सो आई हैव टू राइट अबाउट इट विद फ्रॉम ईट्स आई एम टेकिंग देन यू नो सो में से एस ले रही हूँ फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन्स, वहां से इट गोज इन फ्रॉम स्टमक, द फूड मूव्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, then you know it reaches into the large intestines, so you take L. P for please, from please we are taking P, that is pancreas. Pancreas क्या क्या juices release करता है, and then I say chew slowly, so CH of the chewing food, how it is happening and how it's being absorbed, and then slowly may say I'm taking eating slowly allows better digestion, and don't forget represents, what does it represents, you know, after the nutrients are absorbed, how does it move into your large intestine in the form of a fecal matter and it gets eliminated. So this one sentence, you make some sentence that you can remember of your own interest, so the whole process becomes easier for you to write down for your exam. Now, another important technique to remember is make sure that you know whatever you have learned, you have made your timetable. आप आज जो भी answers याद कर लिए हैं, so you, to remember it till your exams, you have to remember these are the days in which now you are starting your exams are in March, from 15th March. And for other classes, so it is in the month of April. So you have ample time. So पहले आप first time what you have to do, revise after 2 days. Then you revise the same after 7 days, then 15 days, then 30 days. So now it goes into your long-term memory. You will never forget. ये हमेशा आपके पास रहेगा. And you can make your own assessments. आपका assessment teacher, मम्मी, डैडी कोई करने की जरूरत नहीं है. You write your own exams. यहाँ पर तो printer बता रहा है. Don't try, take a printout. Write on your page, paper, and then you do your self-correction. You give your scoring. You will know. You look at the paper from which you have, you know, you have remembered an answer from a standard text material which you have already prepared. तो उसके बाद check from there any point that you have forgotten, and then if that is missed, how many marks you're going to lose. So do your self correction. So this is going to help you than going to your teacher or somebody else to do your corrections. And this is a very wrong myth. हम लोग, most of us, we think boys are especially, we are finding, please restrain from this, is very, very dangerous for your health. सोचते हैं कि smoking is going to activate your brain, or coffee
the caffeines, nicotines, all these things are going to activate. Please don't use it. It's not going to activate, but on the other hand, it's going to harm you. बहुत बुरे इफेक्ट्स होंगे इसके. तो ये जो बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं, that is going to help you in activating your brain cells, it is not. You know, sleeping on time and getting up early. Early 4 o'clock, you just try it once. I'm telling you, it's going to help you like anything. Your mind is very fresh. As soon as you rise up at 4 o'clock, the answers which we are taking, maybe half an hour for you to remember or learn will take few minutes. So that is a ideal time. So try it out. Sleep early in the night. You sleep at 9 a.m., 9 p.m. and get up at 4 a.m. and see the results. And what you eat is very, very important. So please, ये तो टेबल पे पूरा जंक है. इतना जंक खा लेंगे या heavy protein diet लेंगे आप, so you'll always be sleepy, because if you look at how your body system works, when you overeat, or if you are eating a high protein diet, तो आपका blood हमेशा digestion की तरफ ही रहेगा, brain की तरफ जाएगा ही नहीं. तो learning will become very difficult. So during exams, please take light diets with fruits, vegetables. हो सका तो ये 1 महीना non-veg, please avoid oily fried foods and non-vegetarians. So अगर आप ये 1 महीना अगर non-veg में भी avoid red meat, you can go for the lean white meat like chicken or fish is ideal. Go for that. But don't overeat and don't eat lot of non-veg and fried oily foods. Especially examination hall mein, what happens is every student keeps looking at each other, और कोई और एग्जामिनेशन में ज्यादा पेपर्स ले रहे हैं तो हम सोचते हैं कि that student is doing well. Instead of concentrating on the others, you please concentrate only on your paper. Maybe you are taking only 2 answer sheets and you may score more marks than the one who is taking 10 answer sheets. You don't know what they are writing in the answer sheet, how much of the space in the distance that student is maintaining. So don't compare and stress yourself with others. Concentrate only on your paper and look at it. Okay, first question you don't know, go for the second, third, fourth, whichever you feel can help you out, well, go for it. And teacher may give extra question papers to others. Don't get confused or कि मुझे क्यों जरूरत नहीं पड़ी है, why only other students are getting. And another important point is don't discuss about your examination paper with others. So inshallah, I am sure you can do your best. All the very best, dear students. See you all regularly in the school. Any problem, you can contact us, our teachers, 24/7. We are ready to help you. Prepare well for the exams. Take care of the heat. Always carry 2 to 3 bottles of water. Be hydrated. Allah Hafiz.